Good morning students. Today we are going to start with the topic momentum conservation of center of mass. So here we have considered that an external force of F total is acting on the system and capital M is the total mass of the system and ACM is the acceleration of center of mass. Now if the total force acting on the system is 0, we have M into ACM is equal to 0, that is acceleration of center of mass is equal to 0, and the acceleration of center of the mass can be written as the derivative of velocity of center of mass, that is dVcm upon dt is equal to 0, and if the derivative of Vcm is equal to 0 means Vcm is a constant. Therefore, if the external force, जो total external force है on a system of particles is 0, तो उस केस में हमारा जो velocity of center of mass होगा that will be constant. Now, if the external force is 0, उसका मतलब क्या है कि sum of all the forces which are acting on the individual particles will be 0. So we have F1 plus F2 plus Fn is equal to 0. So now force is equal to mass into acceleration. We can write as m1a1 plus m2a2 प्लस सो ऑन टू mn इज इक्वल टू 0. अब जो एक्सेलरेशन है दैट कैन बी रिटन एज द डेरिवेटिव ऑफ द वेलोसिटी. सो वी हैव m1 dv1 अपॉन dt प्लस m2 dv2 अपॉन dt प्लस सो ऑन mn dvn अपॉन dt इज इक्वल टू 0. अब हम जो हमारा डेरिवेटिव है d अपॉन dt वी विल टेक इट कॉमन. वी आर लेफ्ट विद d अपॉन dt ऑफ m1 v1 plus m2 v2 plus so on to mn vn is equal to 0, and if the derivative is 0 we will have that the term which is inside the bracket is constant. So we have d upon dt of p1 plus p2 plus so on to pn is equal to 0. एंड अगर ये 0 है, डेरिवेटिव इसका 0 है, मतलब ये क्वांटिटी क्या है, कांस्टेंट है. सो p1 प्लस p2 प्लस सो ऑन टू pn इज इक्वल टू कांस्टेंट. देयरफॉर अगर एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन the system of particles is 0, then the total momentum is equal to constant. Now जो हमारा position vector है of center of mass, it can be written as m1 r1 plus m2 r2 plus so on to mn rn upon m1 plus m2 so on to mn. Now m1 plus m2 plus so on to mn क्या है हमारा total mass of the system. So we have 1 upon capital M into m1 r1 plus m2 r2 plus so on to mn rn. Now हम क्या करेंगे, we are taking the derivative of the position vector of center of mass. So we have d rcm upon dt is equal to 1 upon capital M m1 dr1 upon dt plus m2 dr2 upon dt plus so on to mn drn upon dt. So यहाँ पे डेरिवेटिव ऑफ आरसीएम हमारा क्या आ जाएगा, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास विच इज इक्वल टू 1 अपॉन m इंटू p1 प्लस p2 प्लस सो ऑन टू pn. अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारी इक्वेशन आ जाएगी p1 प्लस p2 प्लस सो ऑन टू pn इज इक्वल टू m इंटू vcm. सो द टोटल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम ऑफ द पार्टिकल्स इज इक्वल टू द टोटल मास ऑफ द सिस्टम मल्टीप्लाइड बाय द वेलोसिटी ऑफ द सेंटर ऑफ मास. Now we are going to discuss two numericals which are based on center of mass. In the first numerical we have, in the HCl molecule, the separation between the nuclei of two molecules is 1.27 Armstrong, and 1 Armstrong is approximately beta equal to 10 raised to power minus 10 meter. We have to find the appropriate location of the center of mass of the molecule, given that the chlorine atom is about 35.5 times massive as hydrogen atom, and nearly all the mass is concentrated
in all its nucleus. Now हमारे पास क्या है, एक हाइड्रोजन मॉलिक्यूल HCl का हमारा मॉलिक्यूल है जिसमें एक हाइड्रोजन एटम है और एक क्लोरीन एटम है. हमें फाइंड आउट करना है सेंटर ऑफ मास ऑफ दिस सिस्टम. द मास ऑफ हाइड्रोजन एटम इज 1 एंड मास ऑफ द क्लोरीन एटम इज 35.5. अब उसने हमें यहाँ बताया है कि जो हमारा all of the mass है that is concentrated in the nucleus of the chlorine atom. So we will take the जो hydrogen atom at origin and we will make the Cartesian system. This is your x-axis and this is your y-axis. Hydrogen atom is at origin and chlorine atom is at a distance of 1.27 Armstrong from origin. So the coordinates यहाँ पे y-axis में हमारे पास कोई distance नहीं है. The distance is only on the x-axis. So the center of mass will be equal to x is equal to m1 x1 plus m2 x2 upon m1 plus m2. m1 की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, m2 की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, x1 की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, x2 की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो and you will get the value of x of the center of mass. Okay, next question students, we have that three masses 3, 4 and 5 kg are located on the corners of the equilateral triangle of side 1 meter. Locate the center of mass of the system. अब देखो इसमें आपको उन्होंने एक ट्रायंगल दिया है. इस ट्रायंगल जो है वो इक्विलेटरल ट्रायंगल है. इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होता है, जिस ट्रायंगल की ऑल साइड्स इक्वल होती हैं. अब उसने बोला कि हमें इस इक्विलेटरल ट्रायंगल के सेंटर ऑफ मास को फाइंड आउट करना है. इसमें हमारे पास 3 मासेस है, 3, 4 and 5. Suppose 3 kg is placed at O. हमारे O पे 3 है, जो हमारा B पे वहां 4 kg है और C पे हमारा 5 kg है. So we have to find the center of mass of the system. अब center of mass find out करने के लिए हमें क्या क्या पता होना चाहिए. जब उसके 2 कोऑर्डिनेट्स होंगे, अब this is in XY plane, तो जो हमारा center of mass है that will also be in the XY plane. तो उस XY प्लेन में सेंटर ऑफ मास के 2 कोऑर्डिनेट्स होंगे, x कोऑर्डिनेट एंड y कोऑर्डिनेट. तो x कोऑर्डिनेट के लिए हमें क्या चाहिए, डिस्टेंस ऑफ द 3 मासेस फ्रॉम x एक्सिस. अब इसका डिस्टेंस फर्स्ट पार्टिकल इज एट ओरिजिन, सो x1 विल बी 0. अब दिस इज एट द मिड पॉइंट A. तो ये टोटल कितना था 1 सेंटीमीटर. तो OA विल बिकम 1/2 दैट इज 0.5 मीटर. सो जो सेकेंड पार्टिकल है x2 उसका डिस्टेंस ऑन x एक्सिस कितना आ जाएगा 0.5. और जो हमारा थर्ड पार्टिकल है C उसका डिस्टेंस ऑन x एक्सिस कितना आ जाएगा हमारा, टोटल दिस साइड इज 1 मीटर, सो इट विल बी इक्वल टू 1. सो फॉर x coordinate we have x1 is 0, x2 is 1, x3 is 0.5 and the 3 masses m1 is equal to 3, m2 is equal to 4 and m3 is equal to 5. We have x is equal to m1 x1 plus m2 x2 plus m3 x3 upon m1 plus m2 plus m3. Substitute the values and get the answer. Next we have to find the y coordinates of center of mass. For that the distance of first particle on y axis is 0, the distance of third particle on y axis is 0, and to find the distance of second particle we will apply Pythagoras theorem in triangle ABC, and this is the hypotenuse. We will have BC square is equal to AB square upon AC square. तो AB square की वैल्यू क्या आ जाएगी, BC square minus OA square. इस ट्रायंगल में लगाइए चाहे इस ट्रायंगल में लगाइए, इट इज द सेम थिंग. सो वी हैव 1 स्क्वायर माइनस 1/2 होल स्क्वायर. व्हेन यू विल सॉल्व यू विल गेट AB इज इक्वल टू √3/2 मीटर. सो आपके पास y1 0 आ गया, y2 0 आ गया, y3 इज इक्वल टू √3/2. सब्स्टिट्यूट ऑल दीज वैल्यूज and get the value of y.